Hello, children. Again, a video with the minerals, and I have actually explained all these minerals, their varieties, uses, distribution, and largest producers, especially in tabular form. Okay. तो बच्चों बोर्ड एग्जाम्स के लिए अभी आपको पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होना है और उसके लिए ये आपको 100% हेल्प करेगा. Okay, and especially for MCQs also, like the very basic things and small informations what we get from in between the chapter, आपको यहाँ इस टेबल फॉर्म में अगर आप लर्न करोगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इट. आपको जैसे पता है 4 मिनरल्स हैं हमारे सिलेबस में, राइट? और बोर्ड्स के लिए आप अगर ये 4 मिनरल्स प्रिपेयर कर लोगे, मिनरल्स, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये पूरा एक यूनिट है. और उस पे भी मैं आपको टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे दूंगी जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर, राइट? बट अभी मिनरल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं. इट्स वेरी इजी, और कुछ बस पॉइंट्स में अगर आप लर्न कर लोगे दैट विल बी क्वाइट गुड फॉर यू, हेल्पफुल फॉर यू. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद इट. फर्स्ट है आयरन ओर. ओके, आयरन ओर के वेराइटीज हमने पढ़े हुए हैं चैप्टर में, और इसमें सबसे पहला हो गया मैग्नेटाइट, देन हेमेटाइट, देन लिमोनाइट एंड सिडराइट. ओके, 4 टाइप के आयरन ओर्स हैं, और इसमें भी मैग्नेटाइट में आप देख सकते हो, इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है बेटा. Now, 72%, or you can say very close to 70-80% of magnetite has got the iron content, right? Hematite में आपको मिलेगा 68%, almost 68 or above, right? Limonite में 40%, 45%. This is the amount of iron ore, like which you will find in limonite, 40 to 50-55% of it. And siderite में सबसे कम होते हैं. It is the lowest grade of iron ore. Okay, so ये first हो गया. What percentage of iron is present in all these different iron ores. Second हो गया बच्चों uses. मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के फॉर्म में ये यूज होता है, राइट? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में बेसिक जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो आयरन ओर ही चाहिए होता है. सो दैट इज फर्स्ट. नंबर 2 हो गया मेकिंग मशीनरीज, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज एंड ऑल. ठीक है. थर्ड हो जाएगा बिल्डिंग इन द कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड ऑल. ओके, ब्रिजेस हैं, रेलवे लाइंस हैं, रेलवे वैगन्स हैं. Okay, now fourth one will be, because of wide range of use, it is also known as the foundation of present machine age. Okay, this can be one important point for you, right? So this is again, you can say one of the main uses of iron, right? As we all know, without iron ore or without the presence of iron, nothing is possible in the present world, right? Because we can see in every aspect of our life, iron is present in some or the other way. Okay, so that is one part. Then distribution of iron ore. Distribution में बच्चों मेन जो iron ore के जो माइंस हैं वो आप लर्न कर लो, वो important जो states हैं वो लर्न कर लो, that will do. Okay, so just have a look of all these states. उड़ीसा में हो गया क्योंझार, मयूरभंज एंड सुंदरगढ़. झारखंड में हो गया नोआ मुंडी माइंस एंड सिंहभूम माइन. ओके, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा दुर्ग एंड बस्तर. नेक्स्ट हो जाएगा गोवा में. गोवा में जनरल यू जस्ट मेंशन गोवा. ओके, दैट विल डू. तमिलनाडु सैलम, राइट? महाराष्ट्र रत्नागिरी, भंडारा हिल्स. कर्नाटका बेल्लारी. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गए उड़ीसा में, लाइक इन द एंटायर इंडिया, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, with Singhbhum being the largest iron mine in India. Okay, next comes manganese. Manganese में बच्चों वैरायटी आपको मेंशन नहीं करना है. फर्स्ट है यूजेस में. यूजेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस से क्वेश्चंस आते हैं अक्सर इसमें से. Okay, so first use given here is manufacturing special type of steel. In that you will find a very small quantity, but the manganese is used in it to make it, you can say, rust free. ओके, नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रिकल एंड ग्लास इंडस्ट्रीज. थर्ड हो जाएगा इन केमिकल इंडस्ट्रीज टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर, देन डिसइंफेक्टेंट्स, राइट, एंड अदर केमिकल्स. नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन इसका.
मध्य प्रदेश में बालाघाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट माइन फॉर मैंगनीज. उड़ीसा में हो जाएगा क्योंझार, बुनाईगढ़, राइट. देन कुछ और रीजन्स हैं, लाइक कर्नाटका में बेल्लारी हो गया, राजस्थान में है बंसवाड़ा, झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, अगेन इट इज नोन फॉर मैंगनीज ऑल्सो. आयरन ओर में हमने पढ़ा, मैंगनीज के लिए भी जाना जाता है. But the largest producer is Madhya Pradesh in the entire India. Okay, and it is like Balaghat is the largest manganese mine in India. That you should remember. Okay, next is bauxite. Bauxite is an ore for aluminium, as you all know. So uses of it used in making airplanes, then ships and electric wires and utensils. Okay, it is used for making headlights, mirrors, reflectors, telescopes. Okay, and also used in production of cement and all. Basically, children, बॉक्साइट का जो एरिया है वेयर इट इज फाउंड मैक्सिमम इज उड़ीसा, राइट. उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इट. और मेन डिपॉजिट्स इसको इसके आपको मिलेंगे उड़ीसा में भी, सुंदरगढ़, देन संबलपुर, कालाहांडी. दीज आर द इम्पोर्टेंट रीजन्स फॉर बॉक्साइट. ओके. और जो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर ये मिलता है, उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दीज आर द इम्पोर्टेंट स्टेट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट. ओके. नेक्स्ट हो गया बच्चों कॉपर. कॉपर के कुछ टाइप्स इसमें आपको पढ़ने होंगे. कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लैंस, कॉपर chalcolite. Then these are actually the important types of copper which we can find on earth, right, in these forms. Copper is very good conductor of heat and electricity, and hence it is used in making electric wire. Okay, and the various electrical appliances also, in that it is used. Clear? Then next हो गया बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन इसका. खेतरी है. खेतरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइन फॉर द कॉपर, राइट. इट इज इन राजस्थान, उदयपुर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट. एंड मध्य प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर. Okay, Madhya Pradesh is the leading producer, and after that you will find the next producer of it is Chhattisgarh, right? So this is all with the this video, children, and I hope थोड़ा बहुत भी अगर इससे आपको हेल्प मिलेगी इस समय जब आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल एकदम नजदीक है, सो यू शुड टेक हेल्प ऑफ इट. ओके. आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार फॉर अ क्विक रिवीजन, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. ओके, सो विश यू गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. बाय.